Let's move on to the exercises related to grammar portion. So first topic is modal verbs. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलरी के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं एंड दे शो सर्टेन एस्पेक्ट्स इन अ सेंटेंस. ये पॉसिबिलिटी को या परमिशन को या कैपेबिलिटी को या ऑब्लिगेशन को शो करते हैं. एंड देयर आर सर्टेन मॉडल वर्ब्स जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड हैव, हैज़, हैड भी मॉडल वर्ब्स के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं. So first exercise is related to modal verbs, which is put appropriate modal verbs into the gaps. Let's start solving it. First sentence is we dashed to borrow umbrellas so we didn't get wet. So यहाँ पे आएगा we had to borrow umbrellas so we didn't get wet. Second sentence is I was so far from the stage that I dash see very well. I was so far from the stage that I could not see very well. Third sentence is he sees very badly. He dash wear glasses all the time. He sees very badly. He should wear glasses all the time. Modal verbs जो हैं वो suggestions देने के लिए और advices देने के लिए भी use होते हैं. Fourth sentence is you dash drive fast. There is a speed limit here. You must not drive fast. There is a speed limit here. Last sentence is we dash drive fast. We have plenty of time. We should not drive fast. We have plenty of time. फोर्थ सेंटेंस में हमने must not इसलिए लगाया कि स्पीड लिमिट है और रूल को तोड़ना नहीं चाहिए, so there is a strong obligation. फिफ्थ में हमने should not इसलिए लगाया कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, we have plenty of time, तो we should not drive fast. ये एक किस्म की suggestion हो गई. Let's move on to next grammatical topic, which is of active passive voice. So put in the correct form of the verb to complete the following sentences in passive voice. आपको sentence दिया गया है, verb दिया गया है ब्रैकेट में, साथ में आपको tense भी बताया गया है कि किसके अकॉर्डिंग आपने verbs को change करना है. So मैंने पहले भी बताया था पैसिव वॉइस कैसा भी हो, किसी भी टेंस का क्यों ना हो, उसमें हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. चेंज क्या होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं विच डिपेंड्स ऑन टेंस एंड विच डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट कि प्लूरल है या सिंगुलर है. एंड देन फॉर्म ऑफ बी चेंज होते हैं कि बीइंग आएगा या बीन आएगा. सो लेट्स सी. First sentence is a letter dash by Essen and हमारे पास verb है to write and tense है हमारे पास present continuous. तो हम इसे ऐसे change करेंगे. A letter is being आएगा क्योंकि present continuous है and we'll always use third form of verb. Is being written by Essen. Second sentence is the words dash by the teacher today. So we have verb to explain और हमारे पास tense है present indefinite. So हम इसको ऐसे change करेंगे. The words are because हमारे पास जो subject है वो plural है. Again third form of verb are explained by the teacher today. Third sentence is this road dash because of snow. So हमारे पास verb है to close और इसके साथ हमें already भी use करना है and tense is present indefinite. So this road is already closed because of snow. Fourth sentence is the dishes dash by my brother. एंड इसमें हमारे पास वर्ब है टू वॉश, उसका नेगेटिव यूज़ करना है तो नॉट भी यूज़ करेंगे. एंड देन टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. सो द डिशेस आर नॉट बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉश्ड बाय माई ब्रदर. फिफ्थ सेंटेंस इज आई डैश बाय द प्रिंसिपल. वर्ब है कॉल्ड और उसको नेगेटिव में यूज़ करना है तो नॉट आएगा साथ एंड टेंस हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो विल यूज़ आई एम
not called by the principal. Let's move on to our next grammatical topic, which is of कंडीशनल। इसमें हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करेंगे। हमारे पास 3 तरह के कंडीशनल्स होते हैं। इन्हें कंडीशनल्स कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमेशा किसी कंडीशन की बात हो रही होती है, किसी शर्त को मेंशन किया जा रहा होता है, और ये हमेशा इफ़ से स्टार्ट होते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये होगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस। स्पेकुलेट मतलब किसी चीज़ की कयास आराई करना। ये किस लिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं? किसी पॉसिबल सिचुएशन की कयास आराई करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कैसी पॉसिबल सिचुएशन की जो फ्यूचर में हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, कि अगर ये लोग बिजी पीपल हैं तो ये न्यूज़ मिस कर देंगे। मीन्स ये कोई काम अभी कर रहे हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये फ्यूचर में फेस करेंगे, कि ये लोग अगर मसरूफ़ हैं तो ये न्यूज़ मिस कर देंगे, दे विल मिस द न्यूज़। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ के बाद आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है एंड देन फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। Let's move on to its exercise. Which is put the correct form of the verbs to make first conditional sentences. याद रखिएगा कि if के साथ हमने present tense यूज़ करना है और उसके बाद future tense यूज़ करना है next class में। So first tense is, if you dash get back late, I dash be angry. If you get back late, I will be angry. Second sentence is, if we dash wait here, we dash be late. If we wait here, we will be late. Third sentence is, if we dash go on holiday this summer, we dash go to ziyarat. If we go on holiday this summer, we will go to ziyarat. Fourth sentence is, if the weather not improve, we dash not have a picnic. If the weather is not improved, we will not have a picnic. Fifth sentence is the tricky one, as I mentioned earlier, कि आपने present tense को हमेशा if के साथ यूज़ करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि if वाली clause हमेशा शुरू में ही आए। Like in this sentence, they dash go to the party if they be invited. if वाली बाद में आ रही है, so हम present tense if के साथ यूज़ करेंगे। They will go to the party if they are invited. be की forms is am are होती हैं। Thank you. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoriadotpk, signing out.